हम एक बैटर हटा देंगे. सॉरी शशांक, माफ कर देना, आपका रिडेम्पशन वैसे भी हो जाएगा. Simran Singh also in my head would have been a decent shout, but yeah, that's the way the cookie crumbles. Gill unfortunately has been striking at 125 against the very best in the league, so that is where he's falling short. तो चलिए स्वागत है आप सबका एक और बैठक में. आज हम यहाँ पे जुड़े टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक इज द टीम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर आईपीएल 2025. मैं पता कि प्लेऑफ शुरू हो चुके हैं एंड वी ऑफ कोर्स विश द बेस्ट ऑफ लक टू ईच ऑफ द फोर साइड्स. सोमेश हैज कम अप विद एन 11. ही हैज गॉन थ्रू हिज नंबर्स. दैट्स समथिंग ही लव्स टू डू. तो वो 11 के बारे में निखिल भाई और मैं दोनों देखेंगे एंड वील ट्राई एंड सी कि भाई कोई ऐसे प्लेयर्स है जो छूट गए, कोई ऐसे प्लेयर्स है जो हमें लगता है कि यार नहीं यार ये तो इस 11 में होना नहीं चाहिए, जो मेरे को लगता है होगा, कहीं ना कहीं तो होगा. सो सोमेश, लेट अस ऑफ कोर्स throw the floor to you. Let's start with the openers firstly. पहले मैंने ओपनर्स का रोल जिस तरह से डिफाइन किया है इज आई थिंक फॉर मी द ओपनर्स हैव टू डू टू थिंग्स. एक के दे शुड बी एबल टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले एंड बी दे शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. सो उन दोनों को साथ में रख के व्हेन आई एनालाइज्ड कि कौन होने चाहिए इस सीजन के बेस्ट ओपनर्स, तो two clear names stood out. So my opening combination of IPL 2025 is Virat Kohli and Yashasvi Jaiswal. I mean, दोनों ने ही एक चीज बहुत तगड़ी की है सीजन की फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो मतलब रुके ही नहीं है वो. कोहली का एक स्टार्ट हमने लास्ट नाइट ही डिस्कस किया कि इस सीजन के पहले उनके टोटल 4 बार वो 30 या कम बॉल्स में 50 मारे थे. इस सीजन में ही 4 बार मार दिए. इज गोइंग गंग हो. जायसवाल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ही हैज बीन किलर अगेंस्ट द वेरी बेस्ट. एंड अगर मैं सिर्फ उन बॉलर्स के अगेंस्ट देखूं जिन्होंने पावर प्ले में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, सो दीज टू बैटर्स स्टूड आउट. इफ आई हैव टू सेलेक्ट रिजर्व ओपनर, सरप्राइजिंगली दैट नेम वुड हैव बीन प्रियांश आर्या. आई डोंट थिंक कोहली पे इतना मेरे को डिबेट या डाउट है, बिकॉज अगेन विराट इज विराट एंड ही कैन डू द रोल आस्क्ड ऑफ हिम. मेरे मन में दो नाम थे और उनके मैं नंबर्स भी जानना चाहूंगा कि वेयर डज गिल रैंक इन दैट ऑर्डर, क्योंकि जब हमने पिछला एक्सरसाइज करा था in the last video, वहां पे गिल was third on that ranking. Marsh is a name that I had in mind, who I felt was very impactful, both in terms of batting well in the power play and then also ensuring he has an impact on the game. So those are the two names who I want to see where do they stand. I mean, talking about Marsh, decent, averaging 27 and striking at 124 against these bunch of bowlers. Marsh के साथ एक चीज पॉजिटिव है कि once he is set in middle overs में he has been very good against the best bowlers. Which has been good to see. Gill थोड़ा role different है actually. The role that Gill and Sudarshan do for GT is very different from what an ideal T20 opener should be doing. क्योंकि आप अगर बेस्ट 11 बना रहे हो तो you have options नीचे, so you want your openers to be जो बिल्कुल proper 6 ओवर को मैक्सिमाइज कर पाए. गिल अनफॉर्चुनेटली इज बीन स्ट्राइकिंग एट 125 अगेंस्ट द वेरी बेस्ट इन द लीग. So that is where he's falling short. I mean, and very interesting names, and again makes you wonder, right? Because Priyansh Arya, आपने कहा, Simran Singh also in my head would have been a decent shout, but yeah, that's the way the cookie crumbles. And in terms of the kind of names gone for Kohli and Jaiswal, I don't think you can fault either of them for being a part of the 11. Next up, of course, number 3. Somesh, who's your pick? I would like to give out 3, 4, 5 together if that's okay, क्योंकि that's how it goes, right? I mean, your number 3 depends on नीचे कौन आने वाला है, या vice versa कि भाई ये नीचे fixed है तभी ऊपर कौन आएंगे. I think I had my number 4 fixed. My number 4 for the season has to be Shreyas Iyer, and he has to be the captain as well. He is the captain as well. Shreyas Iyer has had a phenomenal season. मतलब number 4 को आप मतलब मिडल ओवर्स में तो बात करो ही करो. आई थिंक ही हैज बीन द बेस्ट बैटर इन डेथ ओवर्स. इन जनरल भी हिज स्ट्राइक रेट इन डेथ ओवर्स हैज बीन अबव 200. और अगर आप बिल्कुल तगड़े डेथ बॉलर्स को भी उस डेटा में डाल दोगे तो भी श्रेयस अय्यर हैज रियली स्टूड आउट. व्हेन श्रेयस अय्यर इज लॉग्ड एट 4, माय नंबर 3 वाज पूरन, बिकॉज वेरी हाई सीलिंग. एंड आई मीन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट पूरन एक अलग लीग में ही ऑपरेट कर रहा था in comparison to the others, and वहां पर he created a very big gap. अगर गिल ओपनर में सेलेक्ट हो जाता तो मे बी कैप्टन वहां पे शॉर्ट हो जाता, and that would have made space for Sky. You never know, but I mean for now number 3 Pooran, number 4 is Shreyas Iyer, and number 5 ये डिपार्टमेंट थोड़ा ट्रिकी था, but all things considered my number 5 was KL Rahul.
if you look at all the best bowlers in the season, there is a fair argument to make कि KL Rahul has been the best batter of the tournament, because हर मैच में नया रोल, कभी ओपन कर रहे हैं, कभी नीचे खेल रहे हैं. So but he's done what has been asked from him phenomenally well. So yeah, I mean, on that regard, and of course, to pick a keeper, I think आप पूरन से भी कीपिंग करा सकते हो, बट दैट डजंट मेक इट एनी इजियर फॉर यू टू सेलेक्ट नंबर 5. बताओ, रिडेम्पशन आर्क तो हो गया. सारे खून माफ सर, सारे खून माफ, क्योंकि for the guy who was, and again, rightly, Somesh has been pointing out about how KL has played in the past in T20 cricket, and for him to be in consideration, to be even close to being the best batter, so I think speaks volumes about the kind of skill that is always had. Of course, I think plenty of things go in terms of what is the role is given, or हर मैच में नया role. I think Sky is the only other guy that I would debate on, क्योंकि I think पूरन के साथ वो आपको अडेप्टेबिलिटी नहीं दिखती when you watch him play. आपको लगता है कि एक चीज है, जो of course he is one of the best T20 batters, but I think Sky runs him very very close. There is one more thing that I would like to call out here, जो मैंने पहले भी बोला कि एक big consideration ये भी था कि players should complement each other. That is where I feel Pooran adds a lot of value, because when you have Kohli in the top two and Jaiswal batting with him, captains won't be bowling spin to them क्योंकि Jaiswal can thrash them. And similarly, if Jaiswal gets out and Pooran comes in, the same theory applies. So that makes Kohli's role also massive. Captains won't be able to bowl the negative matchup in an easier manner. जबकि अगर आप टीम पे बटलर या इवन स्काई को ले आओगे तो वो नेगेटिव मैचअप इंट्रोड्यूस कर पाना कैप्टन्स के लिए काफी इजी हो जाएगा. ठीक है भाई, पहले 500 डिसाइड कर लिए. विराट कोहली एंड जायसवाल के ओपन, पूरन एट नंबर 3, देन यू ऑफ कोर्स गॉट द कैप्टन श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, एंड दैट टॉप ऑर्डर इज कैप्ड ऑफ by having who at number 5? It is of course KL Rahul. 6, 7, 8, the so-called engine room of the team. Somesh, who do we have there? Here again, my number 7 was locked. बहुत सारे डिफरेंट मैट्रिक्स लगा के अगर आप देखोगे तो there is a clear standout number 7 and his name is Shashank Singh. He has had a phenomenal season. तगड़े bowlers को मारा है, आते साथ मारा है. Whatever is needed of a finisher, he has done that. और सीजन के पहले बहुत अच्छी भविष्यवाणी भी करी थी उन्होंने, जिसपे वो खरे उतरे. So my number 7 was locked. उसके अराउंड फिर जब मैंने बाकी पोजीशन सेलेक्ट किए, नंबर 6 के लिए ऑप्शंस were actually Tim David, Henrik Larsson, both were in shout for it, but I've gone with Thurston Stubbs. Again, another one who I feel adapted really well. जब जो सिचुएशन थी, अगर पूरे अर्ली विकेट्स गिरे तो भी Stubbs was there to ensure कि दिल्ली पार स्कोर तक पहुंचा, और डेथ में आके he can, I mean, जो उनकी हिटिंग की सीलिंग है वो तो काफी हाई एनीवे है ही. So from all things considered, the best option for number 6 is Thurston Stubbs. टीम काफी वन डायमेंशनल हो गई है. नंबर 8 पे एक ऑलराउंडर की दरकार है, and considering the pacers that I have in the team later on, there is only one name जो नंबर 8 के कंसिडरेशन में था. कोई और कंसिडरेशन में भी नहीं था. It was that simple. Number 8 team of the season for me is Vipraj Nigam. We can have debate about it, but I don't think there is any other player in this entire league who can balance a team like he does. मिठाइयाँ लाओ भाई, मतलब ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं खाली स्माइल कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन सम कॉन्टेक्स्ट टू द पीपल के समटाइम्स यू लुक एट दिस नेम्स एंड यू विल फील भाई किधर 20 विकेट कहाँ पे लिया इसने. सो द पॉइंट व्हाट वी आर लुकिंग एट इज व्हाट हैव दीज इंडिविजुअल्स डन for their team. It may not have always resulted in wins in terms of how KL Rahul has gone, but the adaptability factor that Stubbs has shown. तो मेरे भी वही नाम थे, स्टब्स थे, शशांक थे, और विपराज निगम को तो मैंने मेरे अनकैप 11 जो हमने एमएनएल पे डिस्कस करी वहां पे भी रखा था. यहाँ पे भी मैंने रखा था कि I would want to see him play, क्योंकि it felt like an untapped potential that Delhi had, but like many things they did not use him well. विपराज निगम के लिए another all-rounder who's done well at that very role, कृणाल पंड्या. यार मतलब बॉल के साथ भी किया. He's also won his side a game with the bat in hand. What about him? The two things that went in Vipraj's favor was कि Vipraj was more of a wicket taker. So वो एक advantage होता है. And second thing is, I think core hitting में जो number 8 के लिए चाहिए, I think Vipraj has more options. Krunal, if you are looking at some, I think Krunal number 8 is too low for Krunal. The kind of batter he is, he should be eyeing that Aksar kind of role where he's actually batting at 5,
for his teams. Fair enough. You know what the engine room is looking like right now. You've got the South African Tristan Stubbs at number 6, and then number 7, number 8. You've of course got an uncapped duo of Shashank Singh and Vipraj Nigam. That leaves us with, of course, the tail 9, 10, 11. Somesh, kaun hai bhai? Okay, so talking about the spinners, या स्पिनर बोलूं तो क्योंकि एक स्पिनर ऑलरेडी टीम में है, so it leaves room for one more. So my spinner at number 9, there were 3 contenders. Kuldeep has had a very good season. Economy wise, he has been the best spinner, but not as many wickets as he and Delhi would have wanted. On the other end of the spectrum is Varun, who has taken wickets and has been very economical as well. But all things considered, I feel it will not be right to not pick Noor in this 11. Will complement Vipraj as well. अगर उस हिसाब से देखोगे तो you'll have one more spinner who's turning the ball the other way. 10, 11 and the impact player. Of course, since हम batting first 11 बना रहे हैं तो obvious है कि ये तीनों bowlers हैं. 2 spinners हो चुके हैं तो एक और obvious चीज है कि ये pace bowlers होने चाहिए. If I'm counting right, I've already used 3 overseas spots, so एक overseas spot खाली है. That spot goes to Josh Hazelwood. Phenomenally good season. Apart from that one game against DC, I don't think he has had an off day. नए बॉल से विकेट्स नहीं मिले हैं, but he has been very difficult to hit. But after the new ball, तो विकेट्स भी मिले. तो Josh Hazelwood has been the best overseas pacer in this season. My number 11 is Jasprit Bumrah. I want him in the field. Field में तो खैर सभी होंगे क्योंकि बैट फर्स्ट 11 है, बट ऑन पेपर नंबर 11 बुमराह, इम्पैक्ट प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा. बहुत ही तगड़ा सीजन दोनों का. बुमराह तो 10 मैच ही खेले हैं एंड ही इज इन द टॉप 5 or 6 विकेट टेकर्स. आई मीन बुमराह के बारे में मैं बात भी क्यों कर रहा हूँ, कुछ 6 वे की इकोनॉमी है, विच इज नथिंग न्यू फॉर हिम. प्रसिद्ध कृष्णा डेथ में ऑलमोस्ट हर बॉल पे विकेट्स ले रहे हो. नहीं बढ़िया. आई थिंक नूर पे तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ. प्रसिद्ध आई थिंक फर्स्ट चेंज अगर बॉलर्स देखें तो इस अगेन 6 की इकोनॉमी है उसकी बॉलिंग फर्स्ट चेंज विच इज इनक्रेडिबल, जहाँ पे 45 प्लस 200 टोटल्स बने इस सीजन. एंड जीटी ने जितने मैचेस खेले रन तो सभी में बने, तो दैट इज इंटरेस्टिंग. आई थिंक एक ही नाम है, दो आई विल नॉट डिबेट हेजलवुड. I feel Trent Bolt probably had a chance to sneak in, but I don't know how Sumesh went about it. क्योंकि बुमराह है, प्रसिद्ध है, तो I think I'm sorted post power play. But power play wickets अगर जॉश को नहीं मिल रहा है, तो I felt Trent Bolt has had good success this season in that way. Fair shout. In fact, Bolt death में भी काफी better रहे is compared to how he has been previously. So yeah, that's one change that can potentially we can make. But मैं फिर भी ये बोलूंगा कि if the ball is not moving, then I feel Josh Hazelwood adds a lot more value than Bolt. So that is the only consideration. I think that's a very interesting final four there. Noor Ahmed, of course, along with the likes of Josh Hazelwood, Jasprit Bumrah, and Prasidh Krishna. So to cap off, of course, let me have the entire 11 out, and then let us see if there are any names to be considered before we wrap up this Baitak. So to begin with, of course, we've got Kohli and Jaiswal opening. Then you've got Nicholas Pooran at number 3. Of course, number 4 pe Kaptan hai Shreyas Iyer. Number 5, you've got KL Rahul. Number 6, there's Tristan Stubbs. Number 7, you've got Shashank Singh. Number 8, there's the leg spin of Vipraj Nigam along with his handy batting. Number 9, you've gone for the left arm wrist spin of Noor Ahmed. Number 10 and number 11 is Josh Hazelwood and Jasprit Bumrah. And of course, the impact player will be Prasidh Krishna. As it well now overall, what do you make of it? Do you see any area that you think might be a cause for concern? तो 11 तो देखो अक्षय ने बता दी, पर एक ही मेरा कंसर्न है कि सिर्फ इम्पैक्ट सबके बाद भी 5 बॉलर बचते हैं. तो लेट्स ऑल्सो गो द RRDC वे. हम एक बैटर हटा देंगे. सॉरी शशांक, माफ कर देना, आपका रिडेम्पशन वैसे भी हो जाएगा. तो नंबर 7 में विपराज निगम को मैं प्रमोट कर दूंगा. सो दैट व्हाट इट हैपेंस इज आई विल होप कि शशांक की बैटिंग ना आए, स्टब्स तक मेरा काम हो जाए, विपराज तक मेरा काम हो जाए, एंड ओनली इफ नीड बी आई गेट इन शशांक एज एन इम्पैक्ट सब. अदरवाइज आई हैव एन ऑप्शन ऑफ कुणाल पांड्या इन द इम्पैक्ट सब टाइम, जहां पे अगर रन्स बन गए तो देन इन द सेकंड इनिंग्स आई हैव 6 bowling options, because then I'll also have Prasidh in the lineup then. So that will be sorted. Well, there you go, folks. You've heard the team of the tournament according to Nikhil and Somesh. So do let us know in the comments ki aapko kya lagta hai. Do you agree with the names? And importantly, do you disagree with the names? Until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much for tuning in.
Please do make sure you hit the like button if you haven't already. And please comments में बताइएगा if there are any more topics that you would want us to do. Until then, take care. Bye-bye.